Are you thinking about investing in Singapore? Let's talk about how a foreign investor can invest in real estate and the stock market, what the benefits are, and how the market has grown in the last 20 years. Singapore is one of the most stable and investor-friendly countries in Asia. It's known for its strong economy, safety, and transparent laws, which makes it a top choice for global investors. Let's start with real estate. Foreigners can easily buy private condominiums or apartments in Singapore. But if you want to buy landed property, like a bungalow or terrace house, you need special government approval. You also can't buy public housing flats, known as HDB flats. There's one important thing to remember. Singapore charges a big tax called Additional Buyer's Stamp Duty, or ABSD. For foreign buyers, this tax is around 60% of the property price. Yes, it's very high, so you need to calculate your total cost carefully. You also have to pay a buyer's stamp duty of about 1% to 4% based on the price of the property. And if you sell the property within 3 years, you'll pay a seller's stamp duty up to 12% in the first year. There's also annual property tax and rental income tax if you rent your unit. Now, let's talk about the stock market. Foreigners can freely invest in companies listed on the Singapore Exchange, known as SGX. You just need to open a trading account with a licensed broker. There are no restrictions based on nationality, and the best part, Singapore doesn't charge capital gains tax. So when you sell your shares for a profit, you keep the full amount. Dividends are also tax-friendly in most cases because of Singapore's one-tier tax system. If you don't want to pick individual stocks, you can also invest in Singapore REITs, real estate investment trusts. They give you rental income without having to buy physical property, and they're very popular among global investors. Now let's see how the market has performed. Over the last 20 years, property prices in Singapore have grown more than 200%. That's an average of about 6% per year. The growth has been steady, not explosive but very stable. The stock market has also shown solid long-term returns, around 6 to 7% a year, depending on the index. So, what are the main benefits? Number 1. Singapore is politically stable and highly developed. Number 2. It's a global financial hub with strong rule of law. Number 3. Your money is safe, the currency is stable, and the country welcomes foreign investors. However, there are also some challenges. Property prices are high, the stamp duties for foreigners are heavy, and rental yields can be modest, usually around 3 to 4% a year. But the upside is stability, transparency, and long-term growth. If you want exposure to Singapore's growth story without high property taxes, investing in stocks or REITs is a smarter and more flexible option. In short, Singapore offers two main paths: real estate for steady value growth, and equities or REITs for easier entry and global diversification. If you're planning to invest for the long term and want your capital in a safe and growing market, Singapore is one of the best choices in Asia. For more such content, subscribe us. On which topic you want video, comment below. और कॉर्पोरेट नेम्स को रिप्रेजेंट करता है JS मोमेंटम फैक्टर ETF JSMF ETF मैनेज्ड बाय JS इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। ये स्मार्ट बेटा स्ट्रेटजी फॉलो करता है और लॉन्च के बाद से इंप्रेसिव ग्रोथ रिपोर्ट की गई है। की पोहर्स ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर ETF JSGB ETF मैनेज्ड बाय JS ग्लोबल कैपिटल। ये पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर देता है और रिसेंट ईयर्स में सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाई है। अल्फाला कंज्यूमर इंडेक्स ETF ACI ETF मैनेज्ड बाय अल्फाला एसेट मैनेजमेंट। ये लीडिंग कंज्यूमर कंपनीज को ट्रैक करता है और मार्केट के रिकवरी पीरियड में अच्छा परफॉर्म किया है। HBL टोटल ट्रेजरी ETF HBLTLF मैनेज्ड बाय HBL एसेट मैनेजमेंट। ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है और स्टेबल लेकिन थोड़े लोअर रिटर्न्स प्रोवाइड करता है, अराउंड 10 से 12% एनुअली। महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF MOO ETF मैनेज्ड बाय महाना वेल्थ मैनेजमेंट। ये शराया बेस्ड ETF है जो टॉप इस्लामिक स्टॉक्स को ट्रैक करता है और नए ETFs में शामिल है NIT पाकिस्तान गेटवे ETF NIT
SIT ETF मैनेज्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये पाकिस्तान की लीडिंग कंपनीज का ब्रॉड एक्सपोजर प्रोवाइड करता है और अर्लीस्ट लिस्टेड ETFs में से है। हाँ, परफॉर्मेंस ओवरव्यू इन ETFs का एक्सपीरियंस लगभग 5 साल का हाई और ओवरऑल परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहा है, खासकर 2023 और 2024 में जब पाकिस्तान का इक्विटी मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था। इक्विटी बेस्ड ETFs जैसे JS मोमेंटम एंड BP ग्रोथ और JS बैंकिंग ने बुलिश पीरियड्स में मार्केट को आउट परफॉर्म किया। HBL टोटल ट्रेजरी ETF कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करता रहा। याद रहे कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देती। ETFs का प्राइस मार्केट के साथ मूव करता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और PSX में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ETFs एक अच्छा ऑप्शन है। आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिलता है और टॉप कंपनीज का एक्सपोजर सिंगल ट्रेड के जरिए मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर ETF का ईयरली परफॉर्मेंस KSE वैसा के साथ कंपेयर करके रिपोर्ट बनाऊं तो कमेंट्स में लिखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा लोग पाकिस्तान के फाइनेंशियल मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्ट करना सीख सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। भी होल्डर हैं तो उनके लिए हम एक फ्री एक वेबिनार भी स्टार्ट कर रहे हैं वीकेंड में। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे आप फॉर्म को फिल करें। अल्लाह हाफिज़।